Hello students, good evening. I'm your physics teacher Vikal and आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. Today we are going to start refrigerators and heat pumps. Refrigerators and heat pumps. Okay, so yesterday we have discussed heat engines. Okay, so what was the function of heat engine? What was the function of heat engine? Heat engine take heat from source and that heat taken from the source will be used to give the work, output work, and some of the heat will be rejected to the surrounding, or we can say to the sink. Okay, here we are going to see refrigerator. So refrigerator, as we know, what is the function of refrigerator? In our home we have refrigerator. रेफ्रिजरेटर का फंक्शन क्या होता है? सिंपल, ठंडा करना. जो उसका चेंबर है, रेफ्रिजरेटर चेंबर है, उसको ठंडा करना. ठीक है. सो रेफ्रिजरेटर इट इज जस्ट ऑपोजिट टू हीट इंजन. हीट इंजन, जैसे हीट इंजन भी एक साइकिल पे काम करता है. ठीक है. सो सिमिलरली रेफ्रिजरेटर आल्सो वर्क्स ऑन द साइकिल व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट टू द हीट इंजन. ओके, हाउ इज इट ऑपोजिट? दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी लाइक हीट इंजन. व्हाट वाज द हीट इंजन? इसकी बहाने हीट इंजन का रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं. हीट इंजन में क्या था? सोर्स था with higher temperature. Source was there with higher temperature. Okay, and this is our heat engine, and lower temperature will be our sink, TL, and it is sink. Okay, and what happens? Heat engine takes heat from higher temperature, and it will supply some work. Okay, work, output work, and it is what? It is Q in, it is work, and it is Q out. Okay, that we have seen in yesterday's class. Heat engine takes heat from the higher temperature, and that is source. Okay, and after that it will do some work, and some of the heat will be rejected to the sink, or we can say atmosphere. ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं कल. अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या होता है. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में हमारा जो सोर्स होता है वो होता है लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर इज सोर्स. ओके, एंड दिस इज अवर रेफ्रिजरेटर. ओके, एंड हायर टेम्परेचर इज अवर सिंक. ओके, नाउ हियर व्हाट हैपेंस? सिंपल. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, heat always flows from higher temperature to lower temperature. If we have two boxes, okay, if we have two boxes, one box is at, like we can say 40 degrees Celsius, and one box is at 10 degrees Celsius. So from which box to which box heat will supply? Heat will move. Heat transfer will take place from which box to which box? Obviously 40 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Okay, 40 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं heat always flows from higher temperature to lower temperature, and it is spontaneously. Higher temperature to lower temperature spontaneously. There will be like कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, अपने आप सिंपली हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. दैट वी हैव सीन इन जनरल लाइफ. इफ वी हैव अ टी कप ऑफ टी, तो क्या होता है? वो अपने आप ठंडी हो जाती है. क्यों? कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ठंडी हो गई. क्योंकि हम जानते हैं हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ठीक है. अब रेफ्रिजरेटर में हम लोग को क्या करना है? व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग को हीट निकालनी है उससे, रेफ्रिजरेटर चैम्बर से हम लोग को लोअर टेम्परेचर से हीट निकालनी है.
तो अपने आप तो रेफ्रिजरेटर के चैम्बर से अपने आप तो हीट निकलेगी नहीं। अगर हम लोग को हीट एक्सट्रैक्ट, देखो यहाँ से अगर हीट 40 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में हीट जा रही है तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसका अप होगा, ठीक है। इसका अप डाउन होगा, इसका अप होगा। तो अगर हमको टेम्परेचर डाउन करना है, मतलब हम लोग को टेम्परेचर डिक्रीज करना है, इफ वी वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम that area, or that we can say that object. Okay, so we have to extract heat from that object. Simple. So this is TL is our refrigerator chamber. Okay, TL is the refrigerator chamber. So we have to extract heat from lower temperature. तो ऑटोमेटिकली तो हीट हमारी जो एक्सट्रैक्ट होगी नहीं लोअर टेम्परेचर से, ऑटोमेटिकली तो हीट एक्सट्रैक्ट होगी नहीं लोअर टेम्परेचर से। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क ऑन दिस रेफ्रिजरेटर, some external work on this refrigerator. So you can see it is just opposite to heat engine. heat engine में हम लोग को वर्क मिल रहा था, heat engine में हम लोग को वर्क मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को वर्क देना पड़ रहा है, हम लोग को वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को वर्क आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग को वर्क देना पड़ रहा है, वर्क इनपुट, वर्क हम लोग को देना पड़ रहा है। अब क्या होगा, इस वर्क की वजह से, इस एक्सटर्नल वर्क की वजह से, यहाँ से टीएल से, लोअर टेम्परेचर से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यू एक्सट्रैक्ट वी कैन डू, एंड दैट क्यू एक्सट्रैक्ट प्लस डब्ल्यू इन will be rejected to the surrounding, or we can say higher temperature, ठीक है। so it will be Q out, it will be Q out. so simple है, देख सकते हो W in यहाँ पे हम लोग को करना पड़ रहा है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, लेकिन हीट इंजन में क्या था, हम लोग को W out मिल रहा था, हम लोग को हीट इंजन में क्या मिल रहा था, W out मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे W in हम लोग को देना पड़ रहा है, that is the difference between heat engine and refrigerator. This is our heat engine and this is our refrigerator. Okay, I hope all of you understood. चलो, तो यहाँ पे समझ आया कि मतलब अगर लोअर टेम्परेचर से हीट निकालनी है तो अपने आप तो नहीं निकलेगी, यही तो हमारा सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, हीट डज नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, और इसी सेकंड लॉ पे हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं सीओपी क्या होता है। सीओपी इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। हाय हाय एवरीवन, हाय, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, हमारा हीट इंजन में क्या होता है, देखो हीट इंजन, हमारा जो इंजन है उसमें क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी होती है हायर टेम्परेचर, एंड दिस इज अवर लोअर टेम्परेचर, दिस इज अवर सोर्स and this is our sink. Hi everyone, hi. What do you want to repeat, like क्या repeat करूं बताओ। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग इंजन की, ठीक है। तो इंजन में क्या होता है, हमारा हायर टेम्परेचर से हीट ली जाती है, ठीक है, क्यू इन हुआ, और कुछ वर्क डन होता है, आउटपुट वर्क मिलता है, और थोड़ी सी हीट हमारी रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, आउट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते थे एफिशिएंसी परसेंटेज हम लोग निकालते थे आउटपुट वर्क डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, हमारी जो हीट ले रहा है इंजन, वो इनपुट है, और जो वर्क दे रहा है वो आउटपुट है, ठीक है। सो W out by Q in, दिस वाज द एफिशिएंसी। और W out हम लोग कैसे लिख सकते हैं, W out हम लोग लिख सकते हैं Q in माइनस Q out अपॉन Q in। सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, देखो
क्यू इन और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्यू इन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इन इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू आउट प्लस क्यू आउट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आउट कैसे मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग का डब्ल्यू आउट हो जाएगा आउटपुट वर्क इज इक्वल्स टू क्यू इन माइनस क्यू आउट। ठीक है, तो ये वर्क की हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो हम लोग को एफिशिएंसी मिल गई ये होगी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेफ्रिजरेटर का क्या होता है। रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी तो होती नहीं है, रेफ्रिजरेटर में हम लोग निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलो, अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर को ड्रॉ कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो हमारा सोर्स टेम्परेचर होता है वो होता है TL, ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, और ये हो गया हमारा TH, जो सिंक होता है वो हमारा होता है हायर टेम्परेचर। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग को जो हमारा ये होता है हमारा सोर्स मतलब रेफ्रिजरेटर चैम्बर। ठीक है, तो हम लोग को इस चैम्बर में से ही तो हीट हम लोग को निकालनी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, सीधी बात है। तो हम लोग को रेफ्रिजरेटर चैम्बर को ठंडा रखना होता है। सो वी विल एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम दिस लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को एक एक्सटर्नल वर्क करना होगा सिस्टम पे। सो हियर रेफ्रिजरेटर पे कुछ एक्सटर्नल वर्क दिया जाएगा, उस पे वर्क इनपुट दिया जाएगा, वर्क इनपुट। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर। जो रेफ्रिजरेटर होगा वो हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हीट निकालेगा लोअर टेम्परेचर से। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर से हीट निकालेगा तो वो हीट हो जाएगी हमारी QE, हीट एक्सट्रैक्टेड QE। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से QE और WIN दोनों मिलके बाहर एटमॉस्फेयर पे फेंक देना है, रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल देगा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Q आउट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, QE plus WIN is equals to what? I'm teaching in English also. QE plus WIN is equals to what? It will become Q out. Okay, so heat extracted plus work input, or we can say external work done on the refrigerator, both will add and it will become Q out. Okay, so from here we can write what? We can write WIN equals to what? WIN is equals to Q out minus Q in, or QE, or QE. E means extracted, heat extracted. Okay, so it is QE. Now what is COP? COP, as you can see, what is the full form of COP? COP is coefficient of performance. Coefficient of performance. That means if COP will be more, that means performance of the refrigerator will be more. Okay, now we will see how to increase the coefficient of performance of the refrigerator. Like, what is the function of refrigerator? To maintain the lower temperature. To maintain the lower temperature in the refrigerator. Okay, so if we want to maintain lower temperature, that means we have to extract more heat from the lower temperature. Okay, we have to extract more heat from the lower temperature. Jitna zyada, how much heat we extract from the lower temperature, that much will be the good performance of the refrigerator. Okay, so QE we have to extract more, and this is input, work input. Okay, so we want to give less work and we want to extract more heat. We want to give work to the refrigerator less and we want to extract more heat. ठीक है, तो हमारा जो COP क्या हो जाएगा, what will be our COP of the refrigerator? That will be heat extracted QE divided by WIN. Okay, I'm from Tamil Nadu, sir. I'm from Bihar. Very good. Wow. I have been to Tamil Nadu and I have been Bihar also. Okay, so COP is equals to QE divided by WIN. Now from here WIN की value क्या होगी? What is the value of WIN? We can put here. So it will become QE divided by Q out minus QE. Okay, understood? So this is our formula of COP, or we can say coefficient of performance. Okay, so for ideal
ideal refrigerator, we can write this COP in terms of temperature. Okay, so QE we are extracting from lower temperature. So here we will write TL, and Q out we are giving to higher temperature. So we can write here TH, and QE is what we are taking from lower temperature. So we can write as TL. Okay, so this is the formula of COP for ideal refrigerator. Okay, we will see. We will use this formula in problem also. Like we are going to solve one question. Okay, I'm from West Bengal. Okay, nice. Okay, okay. So let's solve this problem, which was asked in NEET 2016. So what is given here in this problem? The temperature inside a refrigerator is T2 degrees Celsius. Okay. Room temperature is T1 degrees Celsius. That means this is the lower temperature, TL, and room temperature is higher temperature. This is higher temperature, T1. Okay, so T2 is TL, lower temperature, and T1 is higher temperature. Okay. Now, the amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed. Now we will see. See, this is our refrigerator. I am drawing the diagram of the refrigerator. In refrigerator, this is lower temperature, TL, from which we have to extract heat. Okay, this is our refrigerator. Now, this is our higher temperature. Higher temperature is what? Higher temperature means our ambient, or we can say atmosphere. Atmosphere is higher temperature, because you can see in practical life, you can see behind that refrigerator, you can see you will feel some heat, because refrigerator rejects some heat to the atmosphere, and that heat you can feel behind the refrigerator. Okay, so this TH is atmosphere and TL is our refrigerator chamber. Okay, see, everyone is saying see. Okay, wait, we will solve it. Okay, here what will happen, we have to give some external work. We have to give some external work, or we can say electrical energy. That is what? That is electrical energy. Okay, now if you will see, what was the COP formula? In previous slide we have seen what was the COP formula. COP formula was it was heat extracted QE divided by W in. Heat extracted divided by W in, that we have seen. Okay, so TL is lower temperature. Lower temperature means we can write it as T2 plus 273, because we have to write temperature in Kelvin. That's why we are adding 273. Okay, and what is TH? TH is T1 plus 273. Okay, T1 plus 273. Okay, now if you will see, heat extracted divided by heat, here you can see heat extracted, this is heat out, rejected. Okay, so heat extracted divided by heat rejected or heat out is equals to, we can write as, it is a you can say it is an ideal refrigerator. It is an ideal refrigerator. So it is not given here, but we can assume it. In all the question, we can assume all the refrigerator are ideal refrigerator. Okay, so QE, which is related to the TL. So TL, and Q out is related with the TH. Okay, so what is TL here? TL is T2 plus 273, and TH is what? T1 plus 273. Okay. Now if you will see, here we can write, here what can we write? QE plus W in is equals to Q out. If you will see, QE plus W in is equals to Q out. QE plus W in is equals to Q out. Okay, now here wait a minute.
In place of Q out, I will write QE plus W1. I will write QE plus W1. ठीक है, चलो. So QE upon Q out is what? QE plus W1. QE plus W in. Okay. Now we will reciprocate it. Okay. So reciprocate it. So after reciprocating, it will become T1 plus 273 and it will become T2 plus 273. Okay. And it will become what? QE plus W in divided by QE. Okay. Now divide it. QE divided by QE, it will become 1 and here it will become W in by QE. So we can write it like T1 plus 273 divided by T2 plus 273 and it will be equals to what? It will be equals to 1 plus W in by QE. Okay. Now, 1 we can subtract here. This 1 we can subtract here. Okay. Subtract 1 here. If you will subtract 1 here, what will you get? What will you get? You will get T1 plus 273 divided by T2 plus 273 minus 1. Minus 1, you can take LCM. So it will become T2 minus 273. Okay. It will become W in by QE. So you can see 273, 273 cancel. Here it is remaining what? T1 minus T2. T1 minus T2. Okay. Now what is given in the question? The amount of heat delivered to room for each joule of electrical work. That means they have given W in equals to 1 joule. W in equals to 1 joule. Put here 1 joule. Put here 1 joule. Okay. So if you will put 1 joule here, you will get what? Q extracted. You will get Q extracted. And after that, you can find Q out. Simple. So put here Q, W in is equals to 1. W equals to 1 and Q extracted will be what? It will be just reciprocated T2 plus 273 divided by T1 minus T2. Okay. This is QE. Put here QE. Value of QE here put. And after that, you can find Q out. So QE plus 1 equals to Q out. We have to find what? We have to find Q out. What is asked in the question? Amount of heat delivered to the room. This is the amount of heat delivered to the room. Atmosphere. Atmosphere is room. So amount of heat delivered to the room is Q out. We have to find Q out. Okay, so Q out is what? Q out is what? QE plus 1. So plus 1 here, you have to add 1 here. So T2 plus 273 divided by T1 minus T2 plus 1. If you will take plus 1 LCM, then it will become T1 minus T2. T2 will cancel out. So answer will be our, I am writing here, Q out equals to T1 plus 273 divided by T1 minus T2. What repeat? So this is the answer, T1 plus 273 divided by T1 minus T2. So answer is B. Everyone was saying B. Yes, not C. Who was saying C? No, answer is not C. Answer is B. T1 plus 273 divided by T1 minus T2. What happened? Sir, please repeat. See, कुछ नहीं करना है यहाँ पे हम लोग को. देखो, आइडियल रेफ्रिजरेटर है तो QE by Q out हम लोग लिख सकते हैं TL by TH. अब TL की वैल्यू ये दे रखी है, TH की वैल्यू ये दे रखी है, पुट करो यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है? Q out की जगह रख दो ये. ठीक है, रख दिया ये यहाँ पे. Q out की जगह रख दिया हमने ये यहाँ पे. अब उसके बाद क्या किया हमने? रेसिप्रोकेट किया, मतलब दोनों को उल्टा किया. रेसिप्रोकेट करने के बाद क्या हुआ? देखो ये आ गया. We will get this QE plus W in divided by QE. अब क्या हुआ? QE by QE will become 1, so it is 1, and W in by QE will be remaining here. अब 1 को हम लोगों ने इस साइड ट्रांसफर किया, मतलब it will subtract. Okay, so 1 will be subtracted from this.
So after subtracting, we got QE. क्योंकि WN तो क्वेश्चन में दे रखा है, each joule of electrical energy. Each joule मतलब 1 joule. Okay, so this you have to identify in the question. So WN की जगह रखा 1, तो ये आ गया QE, and QE इधर रख दो, WN 1 रख दो, Q out आ जाएगा. क्वेश्चन में Q out ही तो पूछा है. Okay, understood? I hope all of you understood. ठीक है, चलो. चलो, okay. Now, next question, it was asked in 2016. A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Okay. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. Okay. Now I will draw the refrigerator first. This is TL, lower temperature. Lower temperature is given what? Lower temperature is given 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius. So we will convert it into Kelvin. It will become 4 plus 273. So what is 4 plus 273? It is 277 Kelvin. Okay. Now, this is our refrigerator. And here it is our sink temperature, or we can say atmosphere temperature. That is given as 30 degrees Celsius. So TH is given as 30 degrees Celsius. Convert it into Kelvin. So 30 plus 273. It will become what? 303 Kelvin. Okay. Now what are they saying in question? It is required to remove 600 calories of heat every second. 600 of heat every second. It should remove from where? From lower temperature. How much heat it will extract? It will remove from lower temperature. That much will be cooling in the refrigerator. Okay. So they have given this Q extracted, QE. QE is given. So QE is given in terms of calorie per second. Okay, it is given as QE is equals to 600 calorie per second. We can convert it into joules. How? Multiplying by 4.18 or 4.2. So it will become joule per second. Joule per second is what? Watt. As we know, joule per second is what? Watt. Watt means power. Okay, so here Q extracted is given in terms of power. Okay, that's why they are asking power required. That means they are asking how much power we have to give. How much power we have to give. Earlier we were saying how much work we have to give. Okay, because heat was given in joule. But in question here, heat extracted is given in terms of watt. So that's why we have to find work done in terms of power. Simple. Work done per unit second is what? Power, na? Work done per unit second is power. Work divided by time is what? Power. We have studied this formula in work, power, energy. Okay. So simple. We have to find what? Power. Power input. Okay. Chalo. Now we are going to solve it. Okay. So COP formula was what? COP formula was in the question. Remember what was the COP formula? COP formula was in temperature terms. In temperature terms, it was TL divided by TH minus TL. TL divided by TH minus TL. So what is TL here? 4 degrees Celsius. But we will not put in degrees Celsius. We will put in Kelvin. Okay. So Kelvin 277. TH is what? TH is 303. 303. And TL is what? TL is 277. 277. Okay. So 303 minus 277. What is the answer? 26. 26. So here it will become 277 divided by 26. Okay. Okay. Now, this is our COP. And one more formula was there for COP. What was the formula? What was the formula? Formula was Q extracted divided by work input. Q extracted divided by
work input. But here Q extracted is given in Q extracted per second. And they are asking in question work input per second. Work input per second is what? It is power input. We have to find power input, simple. Okay. तो हम लोग को क्या दे रखा है? ये तो दे रखा है ना, क्यू एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड, यही तो दे रखा है. देखो ये है, ये रखा है, यही तो दे रखा है, क्यू एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड, यही तो दे रखा है. बस अब कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ करना ही नहीं है, पुट करो यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 277 डिवाइड बाई 26 इज इक्वल्स टू क्यू एक्सट्रैक्टेड पर सेकंड इज व्हाट? इट इज 600 into 4.2 and divide by what? Power input. बस अब तो निकाल सकते हैं. So power input will be what? Power input is equals to 600 into 4.2 into 26 divided by 277. Solve it and you will get answer. Hi Ankita. ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ. कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 236.5 watt. ओके, सो आंसर विल बी ए. ओके, मेथड समझ आया, प्रोसेस समझ आया, कैसे कैसे हम लोगों ने निकाला है. All of you understood the process, how to find the COP, how to find this power required. Okay. So COP, we have two formula of COP. We have two formula of COP. One is TL by TH minus TL, and one formula is QE divided by WIN. Heat extracted divided by how much work is given to the system or refrigerator. Okay. So in the question, both temperature are given, lower temperature, higher temperature. So lower temperature put here and higher temperature put here. Okay, in terms of Kelvin. Okay. So after putting lower temperature and higher temperature in Kelvin, we will get this. This is the COP. Now in the question, one thing is given, heat extracted per second, and what are they asking? Work input per second. That is the power. Okay, so simple. Put here heat extracted per second and find the work input, or we can say power input in watt. That's it. Okay, I hope all of you understood. Clear?